lecture on Newton's laws of motion. Motion का एक aspect हमने इससे पहले study किया in consideration of kinematics, जहाँ पर हमने देखा कि how we study variation of velocity, displacement, distance, acceleration, और हम एक object की trajectory को trace करते हैं, which is outcome of some force. लेकिन वहाँ पर हमने force को as a cause of motion consider तो किया, उसकी डिटेल्स में हम नहीं गए कि फोर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, फोर्सेस नेचर में किस टाइप के कितने, और जो फोर्स है वो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की मोशन को कंट्रोल करता है. तो आज जो हम एस्पेक्ट ले रहे हैं इसको हम काइनेमेटिक्स से अलग मानते हैं, इसको हम डायनेमिक्स कहेंगे. तो जो बेसिकली डायनेमिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन. सो बिफोर वी गो टू न्यूटन्स वर्क, जिसको हम न्यूटन की 3 लॉज की शक्ल में याद रखते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. आई कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि न्यूटन की जो हिस्ट्री, उससे पहले की हिस्ट्री है, उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है टू द कॉन्सेप्ट्स जो न्यूटन के ज़माने तक डेवलप हुए थे. तो वी गो बैक टू सम हिस्ट्री, सम टाइमलाइन which we take up from the time of Aristotle. Aristotle lived in around 384 to 322 BC. This was the time जब experimentation नहीं होती थी. Scientific method was not established. Intuition की basis पर Aristotle, who was a natural philosopher, besides his contribution to other philosophies, he framed a law. Aristotle's law says कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एक सरफेस पर मूव कराना चाहते हैं, आपने एक जनरल डे टू डे लाइफ में एक बॉल को रोल करते देखा है. सपोज एक फुटबॉल है, उसको हम किक करें और ग्राउंड पर उसको चलने दें, तो ग्राउंड पर कुछ देर चल के रुक जाता है. आप एक बॉल या कोई पत्थर अगर स्लाइड करते हैं एक सरफेस पर बाय थ्रोइंग इट, वो कुछ देर चल के रुक जाता है. एरिस्टोटल्स दिस ऑब्जर्वेशन वाज some observation which he explained like this. His thought was कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करनी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मोशन प्रोड्यूस करनी है, किसी एजेंसी जिसको बाद में न्यूटन ने फोर्स का, उसकी ज़रूरत. सो फोर्स वाज नॉट कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल, और जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है एक ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि बॉल चलती रहे, हमें तब तक उसकी मोशन दिखाई देगी जब तक उस पर एक फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट करेगा. तो मैंने जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट ए कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म मोशन, ये आपकी समझ के लिए बहुत आसान होगा समझना कि यूनिफॉर्म मोशन उसको कहेंगे जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और एक कांस्टेंट फोर्स उस पर अगर एक्ट करता रहे वो उसमें यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस करेगा. इन अदर वर्ड्स, ये इसी का एक और अल्टरनेट तरीका है कहने का, एन ऑब्जेक्ट मूव्स टिल अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इफ वी kick a ball, our force was there present at the time of kicking. Then onwards there was no force. So if we want the ball to continue its motion, we should continuously keep on kicking on it. Otherwise ये ball move नहीं करेगा. इसको आप आज के perspective से अगर देखेंगे, this statement is not correct. So we can go directly to state one of the laws which we govern, which motion is governed, वो ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट ना करें, if there is no external force acting on an object, it will be either in the state of rest or in the state of uniform motion, जिसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं. तो लेकिन इस पर आने से पहले we go to some other works carried out. So 180 was the time when that metaphysics, उसके concepts grow होने लगे. Then Ibn al-Haytham, who was one of the Persian philosophers and made contributions to science, scientific method, optics, wrote the book on optics, Kitab al-Manzar. उसका जो contribution था वो ये था कि he was almost aware of acceleration due to gravity, the falling objects to the earth. He was aware of the concepts of acceleration due to gravity. So that gave an impetus. उससे एक तरह से एक impetus मिला उस ज़माने में उनके फॉलोअर जो थे पर्शिया में, उनको, जिसमें
इब्न सीना, एविसेना जिसको आप कहते हैं, या अबुल बरकत अल बगदादी, ये ऐसे फिलोसफर्स रहे जिन्होंने इस कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल को एक तरह से करेक्ट करने की कोशिश की, या उनके आर्ग्यूमेंट्स इस रूल के खिलाफ थे दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक फोर्स ही एक्ट करना चाहिए and the body will be in the state of motion. So they were contradicting the framed rules by Aristotle's work. Then we have the journey of Copernicus, who stated he's more famous for heliocentric theory, that Earth is not the center of this universe. जो Ptolemy ने frame की थी geocentric theory, उसके against he is famous for that. We will be talking more about this pair of Tycho Brahe and Kepler once we talk about the gravitation, Newton's law of gravitation. He had a lot of contribution to the growth of theory of gravitation, and including the works of Ibn al-Haytham. We have the name of Galileo, which is very famous for carrying out experiments on the terrestrial motion. Galileo, who was an Italian physicist, is famous for the experiment which probably carried out by making objects to fall from Tower of Pisa. और gravitation के साथ साथ जो terrestrial motion का aspect था उस वक्त के ज़माने में, not the astronomical motion जिस पर ज़्यादा emphasis Tycho Brahe का था, he was able to accomplish some properties and he came very very close to one of the properties जिसको हम आज modern terminology में inertia कहते हैं. So we may start with inertia, but prior to that we go to the last worker जिस पर ये discussion हम ख़त्म करेंगे history की, that was Newton. Newton was born in 1642, the year when Galileo died, and he lived up to 1727, and by about 1666 he was able to formulate some of the principles which govern motion, और जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं. We have first law of motion, we have second law, and we have third law. लेकिन we don't start directly with Newton's law of motion. We start with the property of inertia. और inertia की जो property है उसको हम quantify करने की कोशिश करेंगे, which probably is something at the center of this discussion from Aristotle to Newton's era. So let's talk about inertia first. The term inertia comes from inertness, and it is the word which has been derived from a Latin word, and this Latin word from which inertia is derived means laziness, something that a body does not want to change its state. जो उसका present status है वो उस status को carry करना चाहता है. Now the property of inertia आज की modern जो terminology में हम इसको एक ऑब्जेक्ट के मास के साथ रिलेट करते हैं. ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास हो उतना वो रेजिस्ट करेगा एक चेंज ऑफ स्टेट को. अब चेंज ऑफ स्टेट किस किस तरह से हो सकता है, ये किस किस तरह की लेजीनेस दिखा सकता है ये मास. वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ही कंटिन्यूस और इट वांट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, it would like to continue in the state of motion. It would not like to stop. It resists this change, the change of state of motion to some other state, the state of rest. And then we have inertia of direction. We can illustrate these three types of inertias with some examples. Now, inertia of rest would be something where an object likes to stay in the state of rest, or you can carry out simple exercises like this. I have one. तो मेरे पास एक object है which is a jar or a glass. मेरे पास एक coin है which is somehow a massive thing. और मेरे पास एक sliding CD है जिस पर मैं इस object को रख सकता हूँ. Now what I want to show here in this very small exercises कि अगर हम इस CD को निकाल देते हैं, this object which has a liking for the state of rest right now, अभी ये state of rest में, so it would love to continue in the state of rest. It does not want to change the state of rest. So this is the property of inertia of rest.
So the moment you move the CD, object should have been flying. इसको इसके साथ fly करना चाहिए था, but instead of flying along with this, इसने क्या किया? It continued in the state of rest at the same place और CD निकल गई, object नीचे गिर गया. अब यही एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप एक बस में खड़े हैं और आपकी जो बॉडी का स्टेटस है वो ये है कि द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बस इज एट रेस्ट. द मोमेंट बस स्टार्ट्स मूविंग एब्रप्टली, यू हैव अ फॉल. द फॉल इज दैट यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, क्योंकि जो आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी है इसमें एक इनर्शिया है. इट वांट्स टू रेजिस्ट द मोशन एंड इट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. अब द कन्वर्स ऑफ दिस कुड बी occurring. कन्वर्स ये है कि now the bus is already in the state of motion and brakes are applied, you tend to fall forward. क्योंकि जो आपकी बॉडी है अब ये रुकना नहीं चाहती, पहले चलना नहीं चाहता. Now do an exercise like this, that you have a stone tied to a string. ये आपने एक स्ट्रिंग लिया, इस पर एक पत्थर बांध दिया और ये पत्थर एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है. If you snap this, अगर आप इसको काट देते हो बीच में स्ट्रिंग को, you know what will happen is कि ये जो पत्थर है ये इस एक टेंजेंट के अक्रॉस मूव करता हुआ दिखाई देगा. इट विल शूट आउट अलोंग ए टेंजेंट. यू नो व्हाई? बिकॉज आपका एक फोर्स यहाँ पर इस पत्थर को कंपेल कर रहा था टू स्टे इन द स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन, और जब आपने अपना वो फोर्स इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, इट ट्राइज टू फ्लो अलोंग द टेंजेंट. इन अदर वर्ड्स, जो इसकी टेंडेंसी पहले थी वो थी टू मूव अलोंग द टेंजेंट. इट वाज द कंपल्शन ऑफ दिस फोर्स जो उसको मजबूर कर रहा था सर्कुलर पाथ पर. जब फोर्स खत्म हुआ तो इसने वही टेंजेंशियल मोशन अडॉप्ट कर लिया. तो आपके पास अब काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं which will make it aptly clear कि inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction तीन टाइप्स हैं, और कुछ इलस्ट्रेशन हमने लिए हैं. You can find some more examples. जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, we can find some more examples of these three. तो इसका आप ख्याल में रखें कि amount of inertia in a body is found by finding its mass. Higher the mass, higher the inertia. So this is a very important statement. Higher the mass, higher is the inertia. Higher is inertia. और inertia असल में it's a resistance. Higher is inertia. Inertia is a resistance by which the body resists any change. Change in the state of rest, change in the state of motion, and change in direction. We now come to another very important term which we call as linear momentum. ये एक और term important है जो हम use करने वाले हैं in the coming statements of the Newton's laws. The term momentum actually is a quantification of motion. Quantification of motion means कि अगर हमें amount of motion एक सिस्टम में मेजर करना है, amount of motion, that amount of motion is given by its linear momentum. We are right now talking about a motion along a path, along a straight line or a curved line. Later on we will have something more to it, that will be something which will be measuring the rotation or the amount of rotation possessed by a body. उसको हम angular momentum कहेंगे. Right now we have linear momentum. Linear momentum जो amount of motion हमें देता है, it is simply the product of mass and velocity. And this product of mass and velocity can be utilized to find answer to such a question. Suppose मैं आपको कहूँ कि I have a 5 kg mass, this is a 5 kg mass moving at a speed of 10 meter per second. This is body A. I have a body B which is a body of 10 kg moving at 4 meter per second. 4 meter per second. If I simply ask which is the body, A or B, which possesses more motion, a confusion arises. Somebody looks at the velocity, says कि यहाँ speed ज़्यादा है, यहाँ speed कम है, this must be more motion. Somebody looks at the mass कि यहाँ 5 kg है, यहाँ 10 kg है, it should be that 10 kg is more motion. The simple prescription now is find the product P equal to mv in this case, which will be A is 5, m is 5 into v is 10, so it is 50 kg meter per second. Kg meter per second now becomes the unit of linear momentum.
find the same product here. If I call this PA, let this be PB, momentum possessed by this body, which will be equal to 4 into 10, so it comes out to be 40 kg meter per second. That means कि amount of motion अगर ज़्यादा है तो वो उस object में है जिसका result 50 kg meter per second है. This body A possesses more motion as compared to body B, which possesses less motion. Even though जो mass है वो body B का ज़्यादा है 10 kg, इससे double है, here it is 5 kg only. और जो velocity है इसकी velocity इससे बहुत ही ज़्यादा है. But the prescription is कि हमें product लेना है mass और velocity का, which will decide the amount of motion possessed by a body. And this linear momentum is something which we will be talking about in Newton's laws. और ये आपके लिए एक ऐसी quantity रहेगी which will be continually used till you are studying different problems on motion. And ultimately there is a very important conservation principle in nature जिसको हम law of conservation of linear momentum कहते हैं. So before we go to law of conservation of linear momentum and before we take this discussion further, हमारे पास दो statements हैं. Statement number first, what is Newton's first law? So I call it as law 1 of Newton and we give it a statement. The statement you must be remembering from your lower classes also says, a body continues in the state of rest. A body continues in the state of rest or uniform motion in a straight line until and unless it is acted by an external agency to change that state. So that external agency probably becomes a compulsory thing. ये external agency जब तक act नहीं करेगा तब तक एक object या तो state of rest में रहेगा या state of motion में रहेगा. This is Newton's first law. Now let's compare it to Aristotle's law, which said कि जब तक force act करेगा, जिसको यहाँ external agency का नाम पड़ा, वो force है असल में, तब तक motion होगी. जब वो force हमने stop किया, तो motion रुक जाएगी. No. Here it says कि अगर एक object motion में है और कोई भी force उस पर act नहीं करता है, its motion is perpetual. ये चलता रहेगा. It will keep on moving. That means हमें एक force की ज़रूरत नहीं है object को एक velocity change करवाने के लिए. So a body in the absence of force will move continuously in the state or it will be in the state of motion. Now your apt question could be कि फिर एक ball जो एक football था या एक पत्थर था जिसको हमने slide किया एक surface पर, फिर वो कैसे रुक गया? फिर तो उसको चलते रहना चाहिए. So there are some things which mask this type of situation, जो situation को intrinsically disturb कर देते हैं. उनमें से एक है friction, दूसरा है air resistance और तीसरा है gravity. तो जो हमारी experiences इस अर्थ पर रहती हैं उनमें इन तीनों का रोल ऐसा है कि ये हर जगह आपको मिलते हैं. अब थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम will depend. आपका रफ सरफेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, आपका सरफेस स्मूथ है कम फ्रिक्शन होगा. आप एक फ्लैट सरफेस स्मूथ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड कीजिए तो काफ़ी दूर तक चला जाए. आप उसी ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से एक रफ सरफेस पर फेंक दीजिए तो बहुत जल्दी जाके रुक जाएगा. द कॉज वॉज फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन प्लेज द सेम रोल एज फोर्स. तो जो न्यूटन का कंसेप्ट था उसने एक तरह से यूनिवर्सलाइजेशन की इस आइडिया की कि विच में वट एवर में द टाइप ऑफ फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन है चाहे वो कोई और फोर्स है, इसका जो कॉज है एक बॉडी की चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉज या उसकी वेलोसिटी बढ़ने का कॉज वो एक फोर्स है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज समथिंग व्हिच गिव्स अस द आइडिया ऑफ फोर्स. आइडिया इज दैट वेयर फोर्स इज required and what's its role. Second law goes one step ahead. So we have law second, Newton's second law. It goes one step ahead. It gives us a proper quantified definition of force, quantitative definition of force. And that quantitative definition of force which comes, it comes in terms of the linear momentum of a body. It says that if you want to change amount of motion, I call now linear momentum P as amount of motion. So suppose you want to change amount of motion of a body. Delta P means change in linear momentum. And linear momentum is what? It is amount of motion.
So if you want to increase the amount of motion, आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि मोशन एक कमोडिटी है फॉर अ व्हाइल. ये एक जैसे हमारे पास एक मास होता है, उसको बढ़ाना है घटाना है, इसी तरह की कमोडिटी मान लीजिए इसको. So if you want to change the amount of motion possessed by a body over a period of time, तो उसको मैं डेल्टा टी का नाम दे देता हूँ. Delta t is a small change in time. So if you want to change the amount of motion possessed by a body over a period of time, you can do it only by applying a force. And soon I'll come to two types of forces. One is called as external, other is called as internal. But here, what is active is an external force. So an external force is something which can be responsible for the change in momentum over a period of time. We give it now a vector form क्योंकि force एक vector quantity है. So I write this equation more properly like this, that an external force becomes something like this, derivative of linear momentum with respect to time. I would say that this is Newton's second law, and I have a statement. The statement says, rate of change of linear momentum of an object, is directly proportional to the applied force. And I am making it very clear, this applied force has to be an external force. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the same direction as that of force. Which means कि अगर एक ऑब्जेक्ट का आपको वेलोसिटी इंक्रीज करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना होगा. अगर आपको इसका वेलोसिटी अब डिक्रीज करना है तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाइए. दैट मींस द वे अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टू बी स्टॉप्ड, वी पुश इट बैक. अगर हमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट को और तेज बढ़ाना है, वी गिव इट ए काइंड ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी. दैट मींस द एक्सटर्नल फोर्स has something to do with increase in linear momentum and decrease in linear momentum. This equation also tells us that if we reverse the direction of this force, we are reversing the property of change. Means increase को आप decrease बना सकते हो, decrease को increase बना सकते हो. In other words, आपको चाहे motion को increase करना है या decrease करना है, आपके पास एक ही prescription है nature का, और वो प्रिस्क्रिप्शन है कि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा. नाउ समटाइम्स द इक्वेशन जिसको हम मिसस्पेल करते हैं, जिसको हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, वो ये इक्वेशन है. सो आई हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट डोंट ट्रीट इट एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन until and unless there is a very important condition which is satisfied. Now what's that condition? That condition would be कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, देन दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, अदरवाइज नॉट. तो मैं छोटा सा एक डिफरेंशिएशन कर देता हूं इसका. इफ आई से दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, कैन आई राइट डी ओवर डी टी ऑफ एम इंटू वी. नाउ वेलोसिटी इज द वेक्टर, मास इज अ स्केलर, मास इज अ पॉजिटिव स्केलर. जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, will always be same as the direction of velocity, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है. पॉजिटिव स्केलर को जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, the direction does not change, only the magnitude increases. So if I use the result of differentiation, which says that if I have derivative with respect to x, u into v, it is first function into derivative of second plus second function into derivative of first. What this would mean here? तो मैं मानता हूं कि अगर मास एक ऐसी क्वांटिटी है which is a function of time, which could change in time, और उस पर हम कुछ examples भी देंगे, then we have m into d over dt of v plus v into d over dt of m. तो मैंने u into v formula use किया है, and I have now a very important result. Now this one, the first term is m into a straightway, because derivative of velocity with respect to time is acceleration. But the second term becomes sometimes significant. It is that if you have to see what this external force is doing, this external force is either increasing or changing the velocity, or it is a change in mass. अब आप change in mass कहाँ देखते हैं?
think about the motion of a rocket. So what a rocket is, it is an object where we burn some gases and we exhaust those gases, and when this object exhausts the gas outwards, its mass goes on decreasing over a period of time. If it was initially m, it may become after some time m minus delta m. तो ये जो क्वांटिटी है इसको आप इस केस में इग्नोर नहीं कर सकते. And this is not something different than Newton's second law. ये न्यूटन सेकंड लॉ ही है जो इस मोशन को भी गवर्न करेगा, which is a motion where the mass is changing with respect to time. So you may have to express the mass of this object as a function of time, find its derivative, multiply by the velocity, add it to mass into dv by dt. That becomes Newton's second law. So kindly remember that this is a special case of Newton's second law where object has a constant mass. Once the mass becomes constant, this derivative जो dm by dt है ये zero बन जाएगा, and you will feel कि जो f external है that becomes equal to m times a. So this is to be taken only when mass is constant, because in that case dm by dt will become equal to 0. That way we go to now third law of Newton. So up to now, what we found from first law, there was an idea about force, the role of force played in physics, physical world. Second law gave us a definition of force where a quantity or a quantitative result has come up. If the mass is constant, F is called m into a. If the mass is not constant, is changing with respect to time, it is m into a plus v into dm by dt. Newton's third law gives a very important property of forces which occur in nature. And I introduce it with an example. The example is that imagine a person trying to do an exercise like this. So this is something which a person is trying to do. He is trying to stand in a bucket and pull himself up. Will he be successful by applying a force on the bucket and lift himself up? Will he be successful or no? The answer here is aptly no. Now we start thinking. Force भी है, object भी है, और force apply भी हो रहा है, लेकिन motion नहीं हो रही. A motion can be caused in this case until and unless somebody comes from outside. When I say outside, तो ये man plus bucket system जो है, अगर कोई बाहर से सराउंडिंग से जब तक कोई एजेंसी बाहर से नहीं आती, इस सिस्टम की मोशन मुमकिन नहीं है. Now here we split the forces. जो forces एक सिस्टम पर एक्ट करते हैं, we split them into two kinds. One is called as internal force, which arises from within the system. So from this to this or this to this. And then there is an external force, which comes from outside the system. So an external force will come from outside, some agency outside. It could be another person also. एक आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपको हिलाएगा, जो आपको किसी तरह से push करेगा. It can be a person who is going to act from the outside. He should not be one of these two. Now here the distinction of an internal force and an external force makes it significant कि it is only an external force which can cause the change in linear momentum. ये concept हमारे लिए अब एक और शक्ल लेता है. Why did not the motion take place in this case? जब एक आदमी बकेट को खींचता है और बकेट पर फोर्स एक्ट हो रहा है, why did he not? शायद एक वजह ये हो सकती है कि whatever was the force applied by man on bucket, this force was equal and opposite to the force applied by bucket on man. This can be a possibility that these two forces, they existed in equal and opposite pairs. If I write one of them as F12, force acting on body 1 due to body 2, it is equal to negative of force acting on body 2 due to body 1. And the resultant of these two forces became 0. That's why motion was not caused. अगर इनका resultant कुछ रहता, then as per this relation, which is again a fundamental relation in mechanics जिसको हम
second law कहते हैं. So as per second law, there should have been a motion, but the non-occurrence of motion makes probably this an essential property which we call as action-reaction. A force acting on body 1 due to body 2. If I call it as action, then this action has a force which is equal and opposite to it, that's called as reaction. That means a law which probably is the rule in nature is whenever we think of action and reaction, they become equal and opposite forces, equal and opposite to each other. And something significant, which is very significant here, is कि action एक तरह का force है which is acting on the bucket from man, और reaction एक और force है which is acting on man from bucket. तो एक और बड़ी important property याद रखें that in a system, action and reaction are always equal and opposite. They exist simultaneously. They come into existence at the same time. If you remove action, reaction will be over. Reaction खत्म हो जाएगा उसी वक्त पर. But they act at two different points in the system. They don't act at the same point. अगर ये दोनों एक ही point पर act करते हैं, then a situation of equilibrium will be always caused. अगर ये action है और ये इसका opposite reaction है, this is reaction equal and opposite to it, then this point will be in the state of equilibrium because these forces will always cancel out each other. But it's not so. If they act at two different points in the system, there will not be possibility कि जो object अपनी तरह से एक्शन के इन्फ्लुएंस में है वो अपना एक रिजल्ट दिखाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो रिएक्शन के एग्जिस्टेंस में है या रिएक्शन की वेक में है उस पर रिएक्शन का इन्फ्लुएंस है वो अपनी तरह का एक एग्जिस्टेंस दिखाएगा. We have number of examples where we think of this rule और इसको हम तीनों रूल्स को एक और प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करते हैं, that is law of conservation of linear momentum, which makes the application of these laws very simple in physics. Like one apt example could be कि अगर हम एक गन को बुलेट को शूट करते हैं in the forward direction with the help of a gun, the gun recoils back. तो आप इसको law of conservation of linear momentum से बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. A man jumping out of a boat, जो वो बोट से बाहर जंप करता है तो बोट पीछे की तरफ हिलती है. Now the nature has four fundamental forces, जिनको हम fundamental forces of nature कहते हैं. वो असल में चार forces हैं, fundamental forces. So one is strong or nuclear force. Then we have electromagnetic force. Then we have a weak force. And then we have a gravitational force. In other words, the choice of nature of various phenomena, काफ़ी सारे phenomena हैं, चाहे subatomic world में या astronomical world में, किसी भी जगह आप देखो तो इनमें से कोई force active है. Now nuclear force is the force which actually exists inside the nucleus. तो कई बार आप ये सोच के परेशान हो जाओगे कि एक न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में अगर उनके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ अगर हम देखें कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, सो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर. द रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, द रिपल्शन of proton and proton will make this structure a structure which will be disintegrated, क्योंकि electrostatic force which is governed by Coulomb's law उसमें क्या है कि जो यहाँ पर force of interaction है that is very very strong and it is dependent on distance like this, q1 into q2 divided by r square. Given a distance of about 10 raised per minus 14 meter which is the nuclear radius, तो ये आप देखें कि ये force बहुत ही strong हो जाता है, but still the nucleus lives as a stable structure. Reason is कि इससे भी एक dominant जो से तकरीबन बहुत ज़्यादा dominant force है वो exist करता है nucleus में, and that dominant force is the force which we call as the strong or nuclear force. It is a force which will be
always attractive irrespective of the charge. And there will be more details. एक बार हम gravitational force को पूरी तरह से understand करें, we will put forth a model for the stronger nuclear force called as meson field theory. उससे हम समझ जाएंगे कि how this attraction is maintained irrespective of the charge, and that exists at the close distances. When I say close distances of the nuclear size 10 raised per minus 14 or 10 raised per minus 15 meter. So the electromagnetic force, as I said, is the force which is governing interaction between various charges. When you rub a comb on your hair and put some small pieces of paper, वो उनको attract करता है, you have seen the electrostatic force in action. Charged bodies, the unlike charges attract and the like charges repel each other. Here is Coulomb's law. This is Coulomb's law which will govern them. Now about the gravitational forces, I have a similar equation which says that if G is universal gravitation constant, we have M1 and M2 as two masses, then the force of gravitation between those two masses will be given by Newton's law like this. This weak force is an interaction which we see in processes like beta decay. Beta decay में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो सकता है with the emission of an anti-neutrino, या एक प्रोटॉन बना सकता है एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन with the emission of a neutrino. So that is what we call as the process of beta decay, which is a subatomic process occurs in the nuclei, and this is the forces which govern a process of beta decay. Now on the scale of, say, if I call this as the force of 1, this would be a force जो इसके तकरीबन 10 raised power minus 2, 1 by 100 times होगा. This would be a force जो तकरीबन 10 raised power minus 12 to 10 raised power minus 13 होगा, weak force. And this would be a force which will be nearly 10 raised power minus 38. तो ये scale आप देख सकते हो. This scale gives you a comparison of the forces, that this force is much stronger. अगर हम हाइड्रोजन एटम या किसी और एटम की बात करें, say you are inside carbon atom and you are able to calculate within the nucleons. Nucleons are those particles which are protons plus neutrons inside the nucleus. Their nuclear force, then the electromagnetic force between them, then the weak force. तो तकरीबन जो उनका variation होगा वो इस type का होगा. Many questions arise out of it, like why gravitational force, being one of the weakest forces, is still able to hold the universe. The reason is that gravitational force is always attractive. The electrostatic or electromagnetic force is either attractive or repulsive, depends on the charge. Now again, nuclear force is always attractive, irrespective of the charge. So there will be further some more conceptual work related to this, जो हम और भी आगे बढ़ाएंगे as we go into understanding one of them. फिर इसको एक रेफरेंस बना के, ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस बना के हम बाकी फोर्सेस की और प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करेंगे, इनका कंजर्वेटिव नेचर, इनका इनवर्स स्क्वायर नेचर, इनका सेंट्रल फोर्स नेचर एंड सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज. तो दोज प्रॉपर्टीज विल कम. Before that we will study one of the forces in detail. Now if somebody asks you कि there is a rope which is being pulled, और इस rope को जैसे आप pull करते हो, इसमें कौन सा force exist कर रहा है? The answer is that it is actually the electromagnetic force which is existing inside the rope, because जो rope के molecules हैं, they are somehow held together by bonds. Bonds are actually the electrostatic force. अब एक बड़ा कॉमन फोर्स जो एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज ए टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. अगेन जो चार्जेस हैं दो सरफेसेस के, दे मेक सम टेम्पररी बॉन्ड्स. सो इट्स अगेन ए फोर्स जिसका बेसिक नेचर ये है. डोंट ट्राई टू गेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर डे टू डे लाइफ कि मे बी ए रोप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी ए फोर्स ऑफ दिस नेचर. मे बी ए force of friction between a smooth surface and a smooth glass slab वो बहुत कम है, तो it should be of this. No, that should not be the categorization. जिस तरह से मैंने categorize इन forces को किया है और उनका domain मैंने साथ साथ बोला है, उस domain के मुताबिक और उनकी properties के मुताबिक जो बाकी forces nature में आपको मिलेंगे उनको आप classify कीजिए.
In the days next coming class, we will be talking about tension, friction, and the later dynamics in view of Newton's laws furthermore. Thank you.